Bismillahirrahmanirrahim. Hi students, my name is Waseem Akram. Welcome to the basic accounting lecture number 5. In this lecture we will discuss how to make the journal entries along with the rules I have discussed in the lecture number 4. Also in this lecture we will see the accounting equation of these transactions. Number 3, we will discuss how the capital is increased. Let's start. Here's our question. Mr. Fazal has 3 sons. Each have a bike. 1 year ago, Mr. Fazal bought air filter, oil filter and oil for the bikes from the wholesale shop. Now Mr. Fazal decided to start business of motorcycle parts. This is the main key. Decided to start the business of motorcycle parts. ये इस क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब उसने बिजनेस अब स्टार्ट करने का फैसला किया और 1 साल पहले उसने कुछ एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर अपने बच्चों के लिए लिया था. 1 जुलाई स्टार्टेड बिजनेस विद 900 थ्रू कैश. 1 जुलाई. एक बात याद रखनी है, डेबिट हमेशा लेफ्ट पर आता है, ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, और क्रेडिट हमेशा राइट साइड. One thing you should remember that debit is always on left side and credit on right side. Now, first transactions. पहली transaction, started business with 900 through cash. What does that mean? In the business, cash came. Another thing you should remember that there is always debit and credit equal in each transaction. In each transactions, debit and credit are equal. Debit is always equal to credit, and there is always 2 heads or subheads will be affected, as we discussed in lecture number 1, 2, 3 and 4. There are always 2 heads being effective. Both of those heads could increase. दोनों हेड बढ़ भी सकते हैं, इसको हम प्लस प्लस भी कह सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं. Both heads could decrease. इसको हम माइनस माइनस से भी कह सकते हैं. One head could increase, another could decrease. There are always 2 heads in each transactions. हर ट्रांजैक्शन में 2 हेड्स होते हैं या उनके सब हेड्स होते हैं. Both of those heads could increase. दोनों हेड्स या तो बढ़ सकते हैं. Both of the heads could decrease. या तो दोनों हेड्स लेस हो सकते हैं. The third option is one head increase and other head decrease. एक हेड बढ़ सकता है और दूसरा कम हो सकता है. इस चीज को ज़हन में रखते हुए विल फॉरवर्ड. July 1 started business with 900 through cash.
it means in the business your cash is increased. Your cash is increased by 900,000. When cash increase, cash is asset. Cash is asset. Here are the rules from lecture number 4. Cash increase. When it is increased, cash is an asset. When it is increased, it would be debit. Here. On the other hand, in business, owner has invested, so your capital is also increased in the business. Capital is an obligation on the business towards the owner. Capital increased. Capital increased. So when this increase, it would credit. Debit always left side, credit always राइट साइड. डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पर, क्रेडिट हमेशा राइट साइड पर. कैश इंक्रीज देन इट इज डेबिट. कैपिटल इंक्रीज देन इट इज क्रेडिट. नेक्स्ट, July 2. Invested in business rupees 800,000 or $800,000 through check. Through check means through banking channel. Through check means through banking channel, through bank. The owner has a given amount in the business through bank. It means business bank account increased. Business bank account आपका बढ़ गया. जब बिजनेस बैंक अकाउंट बढ़ गया तो बैंक एक एसेट, बैंक इज एन एसेट, सो व्हेन इट इंक्रीज्ड इट वुड डेबिट. It would debit. Debit is always on left side. Bank increase with 800,000. What is the other head? I have discussed always there are two heads affected. So the other head is capital. Capital is an obligation in the business towards the owner. आसान अल्फाज में ओनर की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसे कैपिटल कहते हैं. ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल इंक्रीज, व्हेन कैपिटल इंक्रीज इट इज क्रेडिटेड. क्रेडिट ऑलवेज ऑन राइट साइड. क्रेडिट हमेशा राइट साइड पर लिखा जाता है. व्हेन कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट. एक और बात ये कि लिखने में कैश लेफ्ट साइड पर, डेबिट है, डेबिट लिखने में लेफ्ट साइड पर और क्रेडिट लिखने में थोड़ा सा राइट साइड पर लिखना है. अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर, डेबिट ऑन लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट शुड बी ऑन a bit right side in the transactions. So let's discuss the third transaction. Brought, not bought, brought AC air conditioner from home to business amounting to rupees 40,000. Now one thing should be remembered. Whenever the owner brings something in the business, it is capital. What brings? It could be cash, it could be bank, it could be fixed asset. Here the owner brought AC from home to business. एक बात याद रख लें, जब भी कोई पर्सनल चीज बिजनेस में आ जाए, जब भी कोई पर्सनल चीज बिजनेस में आ जाए तो उसको कैपिटल कहेंगे.
पर्सनल चीज बिजनेस में लगा दी तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल है, ओनर की तरफ से जो भी चीज आएगी। तो बिजनेस में फिक्स एसेट बढ़ गया, इन बिजनेस फिक्स एसेट्स इंक्रीज, फिक्स एसेट्स आर एसेट्स व्हेन इंक्रीज, these would be debit. Fixed assets, office equipment, AC is AC categorized in the fixed asset, and also the subhead of fixed asset would be office equipment, in which AC has to be categorized. You can write here the narration brought AC. Right here, narration brought AC by owner. $40,000. Fixed asset increase, so debit, and capital increase, so credit. कैपिटल का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होगा, एसेट का बढ़ना हमेशा डेबिट होगा। लेट्स डिस्कस फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ वे आउट टू इंक्रीज द कैपिटल। चौथा तरीकाकार जिससे कैपिटल इंक्रीज किया जा सकता है। Mr. Fazal brought all air filter, oil filter and oil left at home in the business. घर में पड़े हुए, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। The question was, he has bought 1 year ago oil filter, air filter and oil for the bikes of the sons from the wholesale shop. Now he decided to start the business of motorcycle parts. So now the business, he brought all the remaining air filter, oil at home in the business. So what does this thing? Now whether air filter, oil filter and oil, he's doing that business, he's trading that things, those things which are to be traded, those things which are being brought in the business for resale purpose, these are called purchases. So purchases, when purchases increase, debit, purchases increase, debit, purchases up, debit, 35,000. Since the owner brought these things, these personal things in the business, so this is capital, capital increase and credit. चूंकि वो वाली चीज़ें जो बाद में बेचनी है, रीसेल पर्पस के लिए बिजनेस में आई हैं, उनको परचेजेस कहते हैं, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। परचेजेस, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। एक बात दोबारा से याद रखें, हर ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होगा। 900, 900, 8 lakh, 8 lakh, 40,000, 40,000, 35, 30,000, both are equal. Debit and credit are equal. Another thing you should remember, two heads or subheads could increase, could decrease, both heads. One head increase, other head could decrease. Now let's do these all examples, these all transactions through the accounting equation. What is accounting equation? Accounting equation is asset is equal to liability plus
equity. What is equity? Equity is total amount payable to the owners at end of year. It includes the original capital of the owner. It includes the profits earned by the business, and profit belongs to the owner. How profits being work out? Sale plus other incomes sale plus other income minus expenses minus purchases. In nutshell, income minus expenses. And since the drawings are opposite to the capital, drawing is the those amount, those things which owner taken back in the at home or use for personal use personally. ड्राइंग्स क्या होती है? जो ऑनर घर ले जाता है या पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर लेता है वो ड्राइंग्स कहलाती है. तो इक्विटी कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स हो जाएगी. नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस परचेजेस, या फिर सिंप्लिसिटी इनकम माइनस एक्सपेंसेस. इसको हम इनकम माइनस लेस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं. सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. इन सिंप्लिसिटी एसेट इज इक्वल टू obligations. Assets which business owns, liability which business have to pay, equity which business have to pay to the owner, liability which business have to pay to third parties, not the owner. So assets is always equal to liability plus equity. Now these transactions should be discussed. In this first transaction, cash increased, cash up with 900,000. It means cash up. Cash will be written on left side, assets. Cash up with 900,000, cash increased with 900,000, cash plus. Is there obligation increase? No obligation, no liability. Equity, capital increased with 900,000, capital plus 900,000. Assets 900,000 equal to liability plus equity. So accounting equation is equal. Second transactions, bank is an asset. Bank increased. Bank is an asset which is increased. Second transaction, here we discuss second transaction. Bank increased with 800,000, and no obligation increased, but capital increased with 800,000. 800,000 equal to 800,000. Accounting equation is balanced. Now the third transaction. Fixed assets. Fixed assets is an asset
increased plus on other hand capital is also increased plus. So in this transaction also asset equal to liability plus equity. The fourth transaction, 5th July, purchases increased 35,000. Purchases belongs to the profit. Purchases came in expenses. So purchases always reduce the profit. Here profit is purchases always less, so profit less, and in this transaction capital increased. Capital increase means plus, capital increased, but due to the purchases of 35,000, purchases always less in the expenses, so it should be written as minus. Here is the minus I have earlier shown. So profit minus 35,000 plus minus 35,000 is equal to 0. Left side asset 0, right side capital and profit equal to 0. How these are 4 transactions been dealt with. इस तरीके से हम चारों ट्रांजैक्शंस को डील करेंगे. पहली ट्रांजैक्शन जो हमने की थी उसमें कैश बढ़ा था, कैपिटल बढ़ा था. कैपिटल लेफ्ट साइड पर बढ़ गया 9 लाख से, कैपिटल बढ़ गया 9 लाख से, तो लिहाजा आपका लेफ्ट साइड एसेट की राइट साइड लायबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर आ गई. दूसरी ट्रांजैक्शन में बैंक आपका बढ़ रहा है 8 लाख से, कैपिटल बढ़ रहा है 8 लाख से, बैंक बढ़ा आपका 8 लाख से और कैपिटल बढ़ा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी बराबर आ गई. एसेट इज इक्वल टू आ गया लायबिलिटी प्लस इक्विटी के. तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने 40,000 से फिक्स एसेट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा. तीसरी ट्रांजैक्शन में हम देख सकते हैं फिक्स एसेट बढ़ा 40,000 से और कैपिटल बढ़ा 40,000 से. ये तो 3 ट्रांजैक्शन आसान हो गई. चौथी ट्रांजैक्शन में परचेजेस बढ़ रही है. परचेजेस मैंने आपको बताया था हमेशा प्रॉफिट को हिट करती है और प्रॉफिट बनता है सेल्स प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस परचेजेस. सिंपल फॉर्म में इनकम माइनस एक्सपेंसेस. तो अब कैपिटल बढ़ा तो 35,000 से कैपिटल बढ़ा लिया हमने, लेकिन परचेजेस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ. जब हमने ये माइनस परचेजेस किया माइनस 35,000 किया तो प्रॉफिट कम हुआ और हमने कहा 35,000 प्लस माइनस माइनस 35 इक्वल टू 0. ये इक्वल टू 0 आ गया. 0 इज इक्वल टू 0. ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जनरल एंट्रीज को कैसे फिट किया जाता है. जनरल एंट्री के साथ साथ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखी इन अ सिंपलेस्ट वे आउट. वी हैव सीन दिस ट्रांजेक्शन इन अ सिंपलेस्ट वे आउट. इन नेक्स्ट लेक्चर